Yesterday, I gave one example as homework for you. It was a little bit difficult. I hope you people have solved it. If you haven't solved, please go through it once again and solve. Not only that problem which I have given to you, you try to solve all the problems in PPT 31. So now till PPT 1 to 31, I have covered first chapter, introduction to soil properties, then compaction, and then permeability with total stress. Okay, so now total stress thoda main aapko batata hu hint, baki ki aap PPT mein notes pad lo. So the thing is, what I was telling, that all the study material I updated over there, everything, all the lectures or video recordings I have put the links, and then apart from these two chapters notes I gave you, one is compaction, another is first chapter permeability. I will upload shortly, and after this what I gave is all the PPTs up to 31. You need not check in the group now. I have uploaded all 30 link of the all the 31 PPTs which I taught you till now has been uploaded in the teaching diary, both A and B. Okay, so now the things left now in the teaching diary is only MCQs. So MCQs also I will upload, don't worry. MCQs also I will upload. Okay, so apart from this, anything else? No. So everything is clear. If you have any doubts, anything, if you want to share, you can ask me. In teaching diary, there are no notes, no PPTs. Yeah, no, just recently, but 1/2 hour before I uploaded. Just you go through. Okay. Okay. All the 31 PPTs I uploaded, and then notes notes already I uploaded. First chapter and then compaction. Yes, sir. They are uploaded. Yeah, and then classification of soils also, the teacher's notes I uploaded. Even if you didn't get anything, any problem is there, you can call me. Only MCQs are left. Near about 300-400 MCQs I am having, and that is very useful for you people. Because you people are not going to study in detail. So if you want that much only, means for examination point of view, I will share that also soon. Apart from that, on 28th, I am having practical viva for you people, GT. So one external will be there. I will be there to take the examination on this for you people. What else? Anything? Virtual lab. One by one I will take. If possible, today I will complete compaction. Like this, whenever I get the time, I will take virtual lab and complete the remaining practicals. And if you want to do that, I told you already, it's open. You can come whenever you wish. What else? Anything else? तो अब तक तो ना आपको 3 chapter तक. First chapter, permeability and compaction. See, one more topic I left is total stress. थोड़ा मैं आपको basic idea I will give you. You can read in the PPTs. So what is total stress? See, whenever the load is applied on the soil, as I told you, soil is made up of solid and voids, isn't it? Soil कशाने केलेला आहे? Solids, particles आणि voids. Voids मध्ये किंवा ओपन राहत आहे, काहीच राहीना, ड्राय सॉइल असलं तर, बट पार्टली सॅच्युरेटेड असलं तर थोडं पाणी राहणार आणि थोडं एअर राहणार. सो व्हेन यू अप्लाय द लोड, दॅट लोड विल बी टेकन बाय सॉलिड पोर्शन्स प्लस वॉटर पोर्शन. एअर असलं तर प्रॉब्लेम सुटणार लोड घ्यायचं. सपोज इफ इट इज फुल्ली सॅच्युरेटेड, whole water will take the load, and if it is partly saturated, whatever the water is present in the voids, no, that will take it. हे क्लियर झालं का तुम्हाला? तुम्ही केव्हाही लोड अप्लाय करतात, सॉलिड पण घेताय, पाणी पण घेताय, पाणी जे voids मध्ये राहणार. So whatever the load you have applied, this is called total stress. This is called total stress. But what I want is, I am least, as I am studying soil mechanics, not fluid mechanics. So what I am concerned is what the load solid soil particles are taking. I am bothered about it. मला काय पाहत आहे, soil काय load घेऊन आलं. I am bothered about it. So the load taken by solid plus load taken by water is equal to total stress. ते जर वाचून घ्या तुम्ही, sigma, and sigma is equal to sigma dash plus u.
U means pore pressure or water taken by the, sorry, force taken by the, stress taken by the water. So total load is equal to load taken by solids plus load taken by that water. So now total stress is equal to effective stress. Effective stress means separately the load taken by solids. So total load is equal to load taken by solids plus load taken by water. So load taken by solids is called effective stress, and this is equal to total stress minus pore water or load taken by water. So this is a very, very important concept. Please go through it. Effective pressure means, effective stress means the stress taken entirely by solid particles of the soil, and that equal to total load minus load taken by or stress taken by water. Okay, the stress taken by water is also called as pore pressure. Is also called as pore pressure. You go through about this in detail, whatever the PPTs I'm having, or you read it. So even this also, whatever the things a little bit I am living, no, and most probably in the first week of January, once we complete the syllabus, no, what काय काय राहिलेलं आहे सगळं पुन्हा सावडून घेऊ आपण. Now whatever some patches are there in the syllabus, I am not completing. Just like classification of soils in first chapter, second chapter मध्ये थोडं field permeability compaction आहे, and the rollers, vibrators कसं use करतात compaction ला, that one. And in the third chapter, little bit about total stress and all vertical stress, all these things we will study. So whatever the things are left, I will take that one. But major part in first chapter, and then in compaction, and then in permeability, I taught you all with maximum numericals. And I think we started classes in September, no? Most probably September, October, November. So it November 3 plus 1. So near about 3.5 months after teaching 3.5 months, I am able to complete only 3 periods and 3 units. And to come 3 months, at least you leaving aside all holidays, all these things, 3 months. For 3 months, 3 units means still 3 more are there. So I may take 3 more months, but it is not possible. As if I having your exams in the next week, next month, so I have to be hurry to complete your syllabus. I have to be hurry to complete your syllabus. That is also my main aim, to complete the syllabus. Okay, so I may go a little bit not fast, but in the beginning, whatever the topic I start, whatever the chapter I start, I will teach you in detail, so that in the beginning or in the middle, if you understand that chapter very well, that concept very well, no, so rest of the things, the last things you can study yourself also. Then I provide you the notes. It is the situation. By the end of December, I want to complete the syllabus first. Okay, then we can go in detail whatever the topics I left hand. So today I am going to start what is consolidation. Okay, so पहिले अगोदर चांगलं कळून घ्या तुम्ही. बाकीचं सगळं तुम्ही नंतर स्वतः वाचल्यानंतर तुम्हाला कळणार. तर पहिले तुम्हाला माहित व्हावं कन्सॉलिडेशन म्हणजे काय, कॉम्पॅक्शन म्हणजे काय, ह्याच्यावर अगोदर मी सांगतो तुम्हाला. कॉम्पॅक्शन म्हणजे काय करतो, तुम्ही आर्टिफिशियली लोड अप्लाय करतो. कशावर? सॉइलवर. सॉइलवर जेव्हा लोड अप्लाय करतो तर सॉइल मध्ये वाइड्स राहणार, सॉलिड्स राहणार. तर जेव्हा लोड सॉइल पर पड़णार, जब सॉइल लोड सारा सॉइल के ऊपर गिरेगा, वाइड्स में जो भी एयर रहेगा ना, सबसे आसान तरीका है, एयर को कोई वेट नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, जैसे ही लोड गिरता वो एयर एक्सपेल हो जाता, निकल जाता, और इसकी वजह से पार्टिकल्स नजदीक नजदीक आते और डेंस होते, सॉइल डेंस होता, एंड व्हेन डेंसिटी इज इंक्रीज्ड, स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड, परमेबिलिटी इज रिड्यूस्ड. So this process is called compaction. This process is called compaction. So compaction and consolidation का differences भी मैं बताया था. अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. We are going to study what is consolidation. What is its importance? So consolidation is same as compaction. Only thing is वहां पर air निकल के जा रहा था, यहाँ पर water निकल के जाता. तो ये मेजर डिफरेंस है.
वहां वाइड्स में से एयर निकल जाता था, इट इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन। और यहाँ कंसोलिडेशन में क्या निकल जाता है, जो वाइड्स के अंदर पानी है वो एक्सपेल हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग इज कॉम्पैक्शन हम करते, हमको जरूरत है सॉइल का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, हम कॉम्पैक्शन करते, कंसोलिडेशन आप नहीं करते। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरली अपने आप होता। द बेस्ट एग्जांपल इज फाउंडेशन सॉइल के ऊपर आपका पूरा सुपरस्ट्रक्चर का लोड गिरता, एंड बिकॉज ऑफ दैट द water will be expelled. What happens I will tell you further. So this process is called consolidation. तो compaction आपको करना पड़ता है, it is artificial, but consolidation is natural. And third, one more important thing is in compaction what we used to do is artificially or apply, and it is immediate one. आप रोलर चलाए, एयर चला गया, डेंस हो गया, जल्दी काम बहुत फटाफट है, बट इट इज नॉट केस इन केस ऑफ कंसोलिडेशन। मे भी जो ऊपर ऊपर का पानी है थोड़ा बहुत निकल जाएगा, फिर ड्रेनेज है ना, उसका परमेबिलिटी, तो कंसोलिडेशन इज अ लेंथी प्रोसेस। इसमें और टाइप है, इनिशियल कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन, दैट आल्सो वी विल स्टडी। But before that, you should know what is compaction and what is consolidation. Is it clear? What is compaction? What is consolidation? अभी मैं आपको डिटेल में जाता हूँ, एटलीस्ट एक ब्रॉड आइडिया तो आना आपको कि compaction बोले तो क्या, consolidation बोले तो क्या. You should have that idea. Yes, any doubt you can ask. 1 or 2 minutes time I will give you regarding compaction or regarding consolidation. If you have any doubts, you can ask. So before moving to consolidation, let me tell about compressibility. Compressibility is a common thing. जो भी बॉडी आपकी इलास्टिक है, आप उसके ऊपर लोड डाल रहे, इलास्टिसिटी फॉलो करता, when you are putting on the load, that body will be compressed. This property is called compressibility. कोई भी, ये अलग बात है कि सॉइल की इलास्टिसिटी बहुत कम है, आप कंक्रीट को स्टील को लेंगे तो सॉइल की इलास्टिसिटी कम होगी तो कंप्रेसिबिलिटी भी कम होगा, वो अलग बात है, बट कंप्रेसिबिलिटी देयर एग्जिस्ट फॉर सॉइल आल्सो। वाटर इज इनकंप्रेसिबल, वाटर में आपको कंप्रेसिबिलिटी कुछ भी नहीं मिलेगी, बट सॉइल में डेफिनेटली विल गेट लिटिल बिट कंप्रेसिबिलिटी। सॉइल इज नॉट दैट मच इलास्टिक एज ऑल अदर रिवर मेड मैन मेड मटेरियल्स लाइक कंक्रीट और स्टील, बट इट इज लिटिल बिट इलास्टिक. It is not fully plastic. Of course, sometimes it behaves like plastic, that we will study in detail afterwards. But at the time, at this juncture, you should know that whenever a small mass, whenever you apply a force, the body is going to reduce in its size. And this is called compressibility. This is called compressibility. I will read here. When a soil mass is subjected to a compressive force, like all other materials, its value decreases. The property of the soil due to which a decrease in volume occurs under compressive forces is known as the compressibility. So हम compaction में तो इसको consider नहीं करते, but यहाँ पर consider करते. Okay, so whatever the reduction in volume of that body takes, no, soil means soil you can take. So this is known as compressibility of soil. So when compressibility takes, so there are 3 cases. There are 3 cases of compressibility. What are those 3 cases? The compression of soils can occur due to one or more of the following causes. So these are the 3 causes. When you apply the load, when a compression load is applied on the soil, so there are 3 cases. What are those? First one is compression of solid particles and water in the voids. So when you apply the compressive load, so solid particle will be value will be decreased. And second is whatever the water there is, it is there, no, it is also express the feel the pressure. But remember, so water is incompressible. Soil is also not that much compressible. Elastic property it is not having. So this value is very less. That is different thing. But it will feel compressibility. So whenever you apply the load, first case is compression of solid particles
and water in the voids. Water in the voids. Second is compression and expulsion of air in the voids. Of course, when you apply the load, this already we studied in detail, that is compaction. So there is compression of the soil, and because of this, whatever the air is in the voids, that will be expelled. That will be expelled. This is the second case. And third case is, if it is soil is almost all saturated or more soil water is there, expulsion of water in the voids. So entire water, whatever is there in the voids, that will also be expelled. So these are the three cases when you apply the load on soil. These are the three cases when you apply the load on the soils. What are those three cases? Compressibility ke first one, when you apply the load, there is chance that load may cause solid particle to compress, and it may cause whatever the water present in the voids to compress. But this is the rare case. As I told you, water is totally incompressible, and soil is also having a little elastic property. So this case is a rare phenomena it is. Got it? So second one is compression and expulsion of air in the voids. Compression and expulsion of air in the voids. So this already in detail we studied. सेकेंड केस में क्या है, जो आपका एयर है, पानी के बारे में नहीं सोच रहे हम, जो एयर है वो चला जाएगा और कंप्रेशन हो जाएगा. And third one is expulsion of water in the voids, and we are bothered about this case now because second case in the chapter compaction we have studied. First is we are least bothered because it is very negligible, because of the load. सॉइल पार्टिकल्स एंड वाटर पार्ट में बहुत कम मतलब कंप्रेशन हो जाएगा, लेकिन वाटर चले जाने के बाद सॉलिड्स में कंप्रेशन हो जाएगा, वो अलग बात है. सो these, what is compressibility you know, and what are the three different cases of compressibility you should know. मैं पहले शुरू में थोड़ा कंसोलिडेशन सिलेबस स्लो चलूंगा, आपको एक बार कंसोलिडेशन का ऑलमोस्ट आइडिया आया तो लास्ट के चैप्टर में जरा फास्ट करके खत्म कर दूंगा. By the next week I have to complete consolidation before 15th I think. So if I complete that one means 15 to 27, 1 week I will take shear strength, and from 22 to 31st I will take earth pressure. So I have to complete very fast now syllabus. So any doubt you can ask. Once again I will repeat the thing. Compressibility means whenever you apply the load, compressive force, there is decrease in value, and this is the common thing happens in almost all materials. This is the common thing happens almost in all materials. But in soil, when you apply the force, three cases will arise. In first case, whenever you apply the compressive load, there will be compression of solids and compression of water present in the voids. But remember, this is very small quantity. क्योंकि सॉइल भी कॉम्प्रेसिबल नहीं है उतना और पानी तो बिल्कुल नहीं, तो लोड अप्लाई करने से कॉम्प्रेशन वाटर में या सॉइल में आप नहीं देख सकते. ओके, नाउ द सेकंड केस इज, व्हाट इज द सेकंड केस? कॉम्प्रेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ एयर इन द वॉइड्स. जो भी आपके वॉइड्स में एयर है वो एक्सपेल हो जाएगा, फिर कॉम्प्रेशन हो जाएगा, और कॉम्पैक्शन बोलते हैं इसको. एंड कॉम्पैक्शन हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं. कॉम्पैक्शन हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं. नाउ थर्ड वन इज एक्सपल्शन ऑफ वाटर इन द वॉइड्स टेक्स प्लेस. Whatever the water is present in the voids, that will be expelled when you apply the force. And this process we are interested. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. प्लीज यहां तक कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना, इसलिए मैं आराम से जा रहा हूं. लास्ट का टॉपिक में गड़बड़ करके खत्म कर सकता हूं. अगर से ये आप अच्छी तरह समझे तो वो खुद पढ़ भी सकते, लेकिन आपको कंसोलिडेशन ही नहीं मालूम तो आगे का कुछ नहीं पढ़ सकते. तो यहां तक ये तीनों केसेस और कॉम्प्रेसिबिलिटी समझ में आया क्या? If it is there, I will go for the definition of consolidation. So 1 minute time I will give you. Please go through it and try to find if you have any doubts.
Hello, sir. Yes. Somebody. Second. Hello. परत एकदा रिपीट करा. ओके, स्नेहल पाटील इज सेइंग सेकंड थर्ड केस पुन्हा रिपीट करा. थर्ड केस स्नेहल डोंट वरी, पुढे तेच घेणार आहे. आमचं चॅप्टर पूर्ण थर्ड केस वरच आहे. हा एस उदय कोण आहे? उदय कोण आहे बोललेलं? उदय. येस. हा, व्हॉट इज द डाउट? कॉम्प्रेशन अँड सेकंड पॉइंट मध्ये ते एक्सक्लुजन आणि थर्ड पॉइंट मधलं इन्क्लुजन ते म्हणजे त्यात काय डिफरन्स आहे का? डिफरन्स आहे की बघा, सेकंड केस मध्ये काय होणार, एअर निघून जाणार तुझं. इमिडिएट जेव्हा लोड सॉइलवर पडणार ना, तर सॉइल मध्ये काय काय राहणार, सॉलिड पार्टिकल राहणार, व्हाईट्स राहणार. व्हाईट्स मध्ये काय काय राहणार, एअर राहणार, पाणी राहणार. तर इमिडिएटली लोड अप्लाय केल्यावर एअर निघून जाणार अँड दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्पॅक्शन. हे आम्ही कॉम्पॅक्शनच्या आपल्या डिटेलमध्ये पडलो. आता पुढे काय होणार, एअर निघून गेल्यानंतर होणारी, एअर निघून गेल्यानंतर पाणी पण निघून जाणार अँड दॅट इज कॉल्ड एक्सपल्शन ऑफ वॉटर अँड दॅट इज द कन्सॉलिडेशन. हे आधी अजून पुढे आहे. आता तुम्ही फक्त हे आठवण ठेवा. See, once again I will repeat the things. When you apply the load, there will be compressibility. Compressibility means there is reduction of volume. Of course, जे बॉडी किती जास्त इलास्टिक आहे तेवढं कॉम्प्रेस होणार आहे ना. तुम्ही रबर घेऊन बघा, दाबा किती कॉम्प्रेस होत आहे ते, बिकॉज रबर इज मोर इलास्टिक. तुम्ही दुसरं दगड घेऊन दाबलं तर होतंय का? होणार नाही. तर तसं इथं पण when you apply the load, compressibility takes place. So in soil, this can be, classified into three parts. First part is when you apply the load, there is compression of solids as well as compression of water in the voids. But this case is very, negligible. Far kami effect hota hai. Second is when you apply the compressive force, there is compression and air will be expelled. And after this, whatever the water is there, it will start to getting expelled. One more thing you remember, please. Air काय immediate expel होतं. एक दोन दिवसात तुमचं काहीच राहणार तिथं, कॉम्पॅक्ट होऊन बसते तुमचं सॉइल. पण expulsion of water is not that much easy. It is very complicated process and it will take months and sometimes years together. असं तुम्ही लोड घातलं की पाणी निघून जायला, तुमच्या बाथरूम मधलं पाणी गेल्यासारखं. It's not that much easy. सॉइलच्या वाईड्स मधनं पाणी निघून जाणं एवढं सोपं नाही. एक एकदा तर पाणी तसंच राहणार, 2-3 वर्षानंतर जाणार. तर इट इज नॉट, consolidation is not that much easy as compaction. As compaction. I hope till now everything is clear. Now I will take one by one case. I will take one by one case. Compression of solid particles is negligibly small. Of course, we know that because it is soil, it is not rubber, it is not steel, it is not concrete, it is soil. So when you apply the load, compression of solid particles is negligibly small. Compression of water in the voids is also extremely small. अजून soil काय तर compress होणार, water is incompressible. Fluid mechanics मध्ये शिकलात ना तुम्ही, water is incompressible. So compression of water in the voids is also extremely small. As the water is almost incompressible in the range of stresses involved in soil engineering. Therefore, the compression due to the first case is not much significant. Is not much significant. What he wants to say here is that whatever the first case has been arrived, that is insignificant to us because there is less chances of compression of solids and water is almost all nil. So first topic is almost all negligible. So now when we come to the second topic, that is compression and expulsion of air in the voids. हे तर तुम्ही पूर्ण डिटेल मध्ये शिकलात. compaction. Air exists only partially in saturated soils and dry soils. The compression of the air is rapid as it is highly compressible. Further, air is expelled quickly as soon as the load is applied. However, it is not relevant in saturated soils. And what he wants to tell that when you apply the load, if your soil is dry or if your soil is partly saturated, means half air, half water, as air is highly compressible,
Water is incompressible, but air is highly compressible. So when you apply the load, air is expelled quickly. Air is expelled quickly. But in case of saturated soil, there is no air at all. So we don't want to consider that one. So in the second case, what he wants to tell us that when you apply the load, the air, whatever there in the dry soil or partly saturated soil, get expelled, and as air is compressible, it is a quick process. Immediately it gets lost from the voids. So this you have studied in detail. So now no need of studying this one, and this process is called compaction. This process is called compaction. Now we are concerned about the third case. When the soil is fully saturated, compression of soil occurs mainly due to the third cause, namely expulsion of water, and this is consolidation. So consolidation kya hai? This is the consolidation. So what happens in case of consolidation? When the compressive load is applied on the soil, or automatically it may be applied. It is not necessary that we are going to apply here. We are not going to do anything for consolidation. It is a natural process. अपने आप उसके ऊपर लोड आता, झाड़ का लोड आता, कभी बिल्डिंग का लोड आता, हम उसके ऊपर अप्लाई करके एयर निकाल सकते. हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उसके पानी को निकाल सके हम इमीडिएट. कंसोलिडेशन करना इतना आसान नहीं है. कंप्रेशन कर सकते आप, रोलर घुमाओ, कुछ भी घुमाओ, वाइब्रेटर करो, बट मिट्टी में से, वाइड्स में से पानी निकालना इतना आसान नहीं है. So when the soil is fully saturated, of course, to happen the consolidation, soil should be saturated. Otherwise, जब उसमें पानी ही नहीं है तो आपका सैचुरेशन एक्सपल्शन कहां से होगा? When the soil is fully saturated, compression of soil occurs mainly due to the third cause, that is expulsion of water from the air voids takes place, and this process is called consolidation. Definition सोडा, exam मध्ये लिहायचं कसं तुम्ही रट मारून लिहा, by heart करा, whatever you do it, but concept you understand. Most of the things I will tell you, what you feel while studying, I will tell you. मी पण तुमच्याकडे असताना तेच करतो. मी काय नवीन माणूस नाही. जैसे आप लोग हैं वैसा मैं भी हूं. जब हम पढ़ाई करते थे, हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश ही नहीं करते. स्पेशली हम लोग अगर से मराठी, कन्नड़, हिंदी, तेलुगु मीडियम से है, तो हम लोग क्या करते, उसको बाहर कर देते उसको. द कॉम्प्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉइल 10-10 बार लिखते, जाके लिख के आते. और एग्जाम जैसे नजदीक आता, टेंशन शुरू होता, मैं कितना पढ़ रहा हूँ, मेरे को याद ही नहीं रहा, मेरे को बाय हार्ट. और मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं मुझे, सर मेरे को कुछ याद ही नहीं रहा, मेरे को लग रहा ही नहीं कि मैं पढ़ा हूँ. ये सब कब होता? अगर से आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई नहीं की. याद रखो, अगर से आप क्लास केयरफुली सुने, टीचर अगर से अच्छा पढ़ा रहा, आपको समझा रहा है, 10-10 बार आपके दिमाग में बैठ गया, सपोज करो आपका 70% काम हो गया, आपको सिर्फ ऊपर का 30% करना है, तो ऐसी पढ़ाई करने से कॉन्फिडेंस आता, आपको डर नहीं लगता. ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकली हर एक का अलग अलग रहता, कुछ लोगों को डर लगता ज्यादा, मैं भी बहुत डरता हूं एग्जाम. स्टिल एट दिस एज मैं किसी चीज में पास होने से या फेल होने से अब कुछ भी फर्क नहीं होने पड़ने वाला है मुझे. लेकिन फिर भी व्हेन आई गो फॉर राइटिंग एनपीटीएल एग्जाम्स, ऑल दिस थिंग्स, स्टिल आई fear. So that is different thing. It changes from personality to personality. But if you study from concept level, no, ये क्यों हो रहा है आखिर? पानी के निकल जाने से कंसोलिडेशन हो रहा है, ये आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए. ये मालूम ही नहीं रहता आपको, कंसोलिडेशन पूरा पढ़ लेते हैं आप चैप्टर, लेकिन बेसिक क्या चीज है वही नहीं मालूम आपको. तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही, यूनिवर्सिटी एग्जाम में और गेट एग्जाम में यही फर्क है. गेट एग्जाम में आपको रटा रटाया चीज नहीं पूछता, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करता अपने तरीके से. वो आप रट के फॉर्मूला याद करके वहां कुछ भी नहीं कर सकते. तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, हर सब्जेक्ट को आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ो. एक बार आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे तो आपको कोई भी आपके दिमाग में से जा नहीं सकता, किसी भी एग्जाम का आपको डर नहीं लगता. गॉट इट? लेकिन मोस्टली हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, आपकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि आप क्या समझे मैं ये नहीं पूछता, आपके पेरेंट्स नहीं पूछते,
what the parents want, what the society wants, what your relatives want, what your parents and friends and teachers want is what is your percentage. If you say I scored 90, oh very good beta, you are very intelligent, you are very brilliant. लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम की खामी है. आपको 90% है और आपको कोई स्किल नहीं है, आप यहाँ बेसिक ही नहीं मालूम, तो आपको समझ में ही नहीं आता. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू. और मैं खासकर हमारे ब्रांच में देखा हूं, मैं मेरे राइट फ्रॉम 20, आप जब पैदा हो गए उससे पहले से पढ़ा रहा हूं मैं, इतने लड़कों को देखा. ऑफ कोर्स जो पढ़े लिखे हैं, मार्क्स अच्छे, उनके तो करियर बढ़ते. सिविल इंजीनियरिंग में ऐसे ऐसे लड़के इतने बड़े बड़े पोस्ट पे है, बड़े बड़े मैनेजर पोस्ट पे, जो 4 साल की डिग्री 7 8 साल ली, बिकॉज दे लर्न द वर्क. कॉन्सेप्ट समझ में आया उनको बाद में कभी ना कभी. सो प्लीज गो थ्रू इट. मेरा बोलने का एक ही मतलब है, हम क्यों पढ़ रहे इसको आप समझने की कोशिश करो. वो टीचर को आप तंग करना, सर ये कैसा आया, चुप मैं आपको पढ़ा रहा हूं, Q इज इक्वल टू K इंटू आई इंटू ये रखो, एक K का वैल्यू रखो, फॉर्मूला निकालो, दिस इज द Q. दैट इज नॉट एट ऑल नीडेड फॉर यू. वो तो तुम खुद भी कर सकते, बुक में लिखे सो Q इज इक्वल टू K इंटू आई इंटू ये. लेकिन ये Q कैसा आया, I क्या है, ये I क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, ये डार्सीज लॉ क्या है, ये आपको क्लियर होना. और ये आपको अभी भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, धीरे 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 सोच बढ़ती जाती है आपकी. नाउ दिस इज द राइट एज टू स्टडी एनीथिंग. अब तक आप जो भी पढ़े चलो ठीक है, लेकिन अब आप कोई सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो. दैट मैटर्स अ लॉट, मेनी थिंग्स. गॉट इट? ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग दैट the compression of a saturated soil under a steady static pressure is known as consolidation. The compression of a saturated soil, remember this is saturated in this sense there should be water. If there is no water, how the consolidation is going to take place? It is the expulsion of water. To get the water expelled, it is see, I am taking maximum time to teach you this topic only because मैं चाहता हूं आपको ये पूरी तरह समझ में आए. लास्ट के थोड़ा टॉपिक में आपको छोड़ भी दिया तो आप खुद कर ले सकते, लेकिन मैं चुप आपको एक डेफिनेशन पढ़ के हाँ नेक्स्ट स्लाइड, सिलेबस खत्म किया तो वो सिलेबस किसी काम का नहीं. याद रखो, the compression of a saturated soil under a steady static pressure is known as consolidation. It is entirely due to expulsion of water from the voids. It is entirely due to expulsion of water from the voids. The solid particles shift from one position to another. देखिए अब एक सॉलिड पार्टिकल है, ये सॉलिड पार्टिकल है, इसमें से पानी निकल गया. पानी निकल जाने के बाद क्या होता, देखिए मेन उसमें पानी रहता, पानी निकलने जब वो पिचक जाते हैं, समझ रहे आप, पिचक जाते हैं मतलब वो मतलब काय होते ते वाळून जाते, तो वाळून गेले की जवळ जवळ ते कसं ज्या आप में और एक बूढ़े आदमी में क्या फर्क है, हाँ जुरियां आते उसको पिचक जाता हो, तो वैसा ही ये सॉलिड के पार्टिकल्स पिचक जाते तो उसमें वाइड्स आते. वाइड्स आने के बाद ऊपर से और लोड गिरता और ऊपर से और लोड जाने से वो और नजदीक आ जाते. तो यहाँ पर एयर चला जाता पहले कंप्रेशन से, फिर ये चला जाता और वो नजदीक आके क्लोजर पैकिंग बनता. इसके बाद 2-3 मिनट का ब्रेक ले लो, आप रुक जाता. It is worth noting that the decrease in volume of soil occurs not due to the compression of solids or water but due to the shifting of position of the particles. इस बात को आप अंडरलाइन करो. ब्रेक के बाद मैं इसको आपको डिटेल में जाता हूं. तो सिर्फ पानी जाने से, एयर जाने से आपका कॉम्प्रेशन नहीं हो रहा है. यहाँ पर